Hello everyone. Welcome to YouTube channel HealthQ, the place where our mission is to motivate you and help you to move on to the brighter side of the health. So I'm back live today, and today's topic that we are going to talk about is facial paralysis, the challenges that people experiences during facial palsy. So this live interaction is meant to solve all your questions that you have related to facial palsy. So feel free to post your questions in the comment section so that I can read out the comments and try to answer as many questions that you have in this session. So we would be keeping the session for 30 minutes. So our time starts now. So please hurry up to post your questions. Thank you so much for joining and good evening, Life with OCD. Thank you so much. Good evening. Do I have any question from your end? Feel free to type in. All right. So if I'm audible to you guys, if you can just put a thumbs up, I'll get an idea that the internet is working well. You are able to hear me out, and then even I can talk in middle related to facial paralysis if you want, right? Okay, so till the time we start getting questions, let me talk a bit about facial palsy because I guess a lot of people that have taken help from us at HealthQ Rehab are the ones who are suffering from facial paralysis. So I would like to talk about it. And there we go. I got a first question, and that is, "Hi, ma'am. Good evening. Can you explain what are the reasons behind facial paralysis?" Sure. So there are many reasons behind facial paralysis. Facial paralysis not just happens due to Bell's palsy. So broadly saying, facial paralysis will either happen if there is a problem in the brain or there is a problem in the nerve, right? To make it as simple as possible. So whenever a person have got stroke, okay, or else a person have got a tumor in the brain, or else somewhere tumor around the temporal, or you can say the head region here, which puts pressure on the nerve, right? At that time, a person can develop facial paralysis. If a stroke attack has happened and the brain damage has happened in the area from where the facial nerve originates, then also facial paralysis will happen, right? Now, but most of the time, facial paralysis happens in the lower motor type, which means in the ear region. Okay, and when it happens at the ear region, what exactly happens? Either there is inflammation around the nerve, okay, which is present inside the ear, or else there is pressure that is falling on the nerve due to infection, right? A viral infection, a bacterial infection, a fungal infection, right? It could be anything. Even conditions like Lyme disease, otitis media, then women who are pregnant, okay, so during pregnancy their body goes through edema, right? The body is swollen, so that swelling also can go to ear and cause compression on the nerve and can lead to facial paralysis, okay. And apart from that, if a person has got some sort of violence attack where he was hit at the ear level, or as he fell down in a road traffic accident where the nerve got damaged, in all this situation, facial paralysis can happen. Okay, so these are the reasons why facial paralysis happens. When a diagnosis is made as Bell's palsy, most of the time Bell's palsy is an idiopathic condition, which means the cause is not known. We rule out everything, nothing looks like nothing relatable is found. At that time, it is Bell's palsy. Okay, so hi Dr. Megha. So Titanic Love is asking question, मैम 1 year हो गया बेल्स पाल्सी को, उसके बाद मेरे लेफ्ट साइड हैंड एंड पाव में वीकनेस आती रहती है, क्या बेल्स पाल्सी की वजह से होता है? नहीं, बेल्स पाल्सी की वजह से कभी भी दूसरी बॉडी में वीकनेस नहीं आती है। हाँ, एक चीज जरूर होती है कि आपकी बॉडी की अलाइनमेंट अगर बहुत पुराना बेल्स पाल्सी है तो चेंज हो सकती है। क्या होता है कि ये जो फेशियल मसल्स है उसमें एक मसल होता है प्लेटिज्मा मसल, ठीक है, ये ऐसे टाइट हो जाता है। जब ये टाइट होता है तो वो सारे हमारे शोल्डर के मसल को खींचता है, हमारे बॉडी के मसल को भी खींचता है, राइट? तो वहां से वो इम्बैलेंस होने शुरू होते हैं धीरे धीरे, और वो आपकी एक साइड की बॉडी को हल्का सा टाइट और स्टिफ बनाना शुरू कर देते हैं, और ये
All right. So I hope that answers. Arohidani, is physiotherapy treatment for of Bell's palsy and facial palsy same? No, it varies depending on individual to individual, cause to cause. Dr. Megha Asati asking, whole face is not affected in UM and facial palsy. No, it's because the lower part. Okay, so it only involves the branches which starts from here, right, as two controls, your cognitive control and your functional control. Okay, so there is an overlap of nucleus like this in the brain of the facial nerve. Okay, so the upper part will come from the opposite side and the lower part will come from the same side of the nucleus. That's why there is damage that has happened. So only the lower part will be affected, not the upper part. Tanya is asking, hi, so happy to see you live. May I ask, mine was caused by COVID, but is it normal to feel pain after 7 months still in the area on the eyebrow and cheek? Yes, Tanya, it's very normal to see pain around the face. Now, the pain is happening due to muscle spasms and contracture that often happens post Bell's palsy. Okay, so that's very normal. What you can do is you can do a lot of hot fermentation, a lot of facial massage to get rid of these facial pains, and try to keep yourself as relaxed as possible because your face has a lot to do with your expressions. So if you're worried, you will make micro expression of worry, which is all forceful expression, which will cause pain in your face. Okay. Titanic Love again is asking a question. 1 year हो गए Bell's palsy, उसके बाद मेरे left side and ओके दैट्स द सेम क्वेश्चन. ओके, क्या सिनकाइनेसिस की वजह से आंखों के मसल पे भी स्वेलिंग हो सकती है? क्योंकि मेरी आंखों के मसल में स्वेलिंग हो गई है जिसकी वजह से मैं हमेशा दर्द रहता है. आंखों के मसल में स्वेलिंग नहीं होती, लेकिन क्या होता है, आंखों के मसल के आसपास फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है. ठीक है, हम लोग का ब्लड सर्कुलेशन होता है, वैसे ही सेल्स के बीच में फ्लूइड्स होते हैं जो ठीक से ड्रेन आउट नहीं हो पाते क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम अफेक्ट हो जाता है. ठीक है, उसके वजह से आपको स्वेलिंग फील होती है. रेगुलरली अगर आप आई मसाज करते हो तो आप उसकी वजह से स्वेलिंग कम होगी और आपको पेन भी कम होगा. ठीक है, सो रेगुलरली आप ऐसे आई मसाज कर सकते हैं. दैट विल हेल्प यू. ओके. पाँव भारी भी लगता है. टाइटेनिक लव, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप प्लीज़ एक बार चेकअप ठीक से कर लीजिए. आप चाहे तो कंसल्टेशन हमारे साथ भी ले सकते हो. मे बी आपका पूरा हिस्ट्री लेने के बाद ही मैं आपको समझा पाऊँ कि इसका क्या सोल्यूशन है. Payal Guwahati, is there, I'm suffering since past 4 years, not recovered fully. Is it possible? Will any possibility of full recovery? So Payal, there is lifelong possibility for the nerve to regenerate. Okay, but what happens? The problem is that this nerve, no, will go through some permanent damages due to which whatever the nerve regenerates also will be a little different in shape. ठीक है, so this due to that difference of shape there would be weakness that will be felt on the face. So this side of the face would be slightly weaker compared to the other side. A simple analogy, ठीक है, एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझ आती हूँ. जब हमको फ्रैक्चर होता है, ठीक है, तो वो बोन, वो हड्डी जुड़ भी जाती है, उसके बाद भी जो इंसान जिसको फ्रैक्चर हुआ है उसको बहुत अच्छे से पता चलता है कि कौन सा उसका फ्रैक्चर वाला लेग है और कौन सा नहीं है. Right, so both the legs are having there are two legs, right? One leg has got fracture, so even though the bone has joined completely, still the person who has suffered from that fracture will experience or will can feel something is going wrong in the affected leg. They can feel that weakness. Very similarly, Payal, when facial paralysis happens and if it does not recover for 1 year, right, for a long duration, even though the nerve recovers, right, the muscles that recover are not 100%, they are felt little weak. That's why you feel that the nerve recovery has not happened, but most of the time it's the tightness and the stiffness that makes your movements incomplete, so that needs to be addressed. Tanya is asking, thank you for your answer. Videos and exercise help me recover and not to lose faith. I appreciate you. Thank you so much. Thank you so much, Tanya. All the very best for your recovery, and I genuinely believe that you will definitely be fine.
सिम्योल पटेल इज आस्किंग, हेलो मैम, मुझे बेल्स पाल्सी प्रेगनेंसी के 9th मंथ में हुआ था। मैंने कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं लिया है, अभी स्टिमुलेशन चल रहे हैं, क्या मेडिसिन नहीं लेने से रिकवरी पे इफेक्ट हो सकता है? डेफिनेटली, अनफॉर्चुनेटली सिमिल, मेडिसिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप मेडिसिन नहीं लेते हैं तो नर्व पे से प्रेशर नहीं निकलता है और वो नर्व को डैमेज करता है। आई वुड हाईली रिकमेंड प्री स्टिमुलेशन मत लेना, क्योंकि स्टिमुलेशन ओवर स्टिमुलेट करता है मसल्स को, स्पाजम्स आते हैं उससे और आपका फेस टाइट होता जाएगा। So please don't consider taking electrical stimulation. Electrical stimulation is not the solution for facial nerve recovery. ठीक है? Electrical stimulation has nothing to do with your facial nerve regeneration. It's a superficial tool just to maintain health of your muscles. That's it. So please consider doing that. If you want, I can help you. You can take up a consultation, and I can exactly guide you what you should do, what you should not do. Any other questions, guys? There's a pause. Okay, so I'll just put my website here. So if anybody is interested in booking an appointment with me, they can book. Okay, so then Payal is asking, thank you so much, ma'am, for clear explanation. Most welcome, Payal. Any other question, friends? I'm here to answer your questions only, all right? I don't have anything specific to say. I'm just here to answer your questions. Um, okay, so there's one more question. क्या फर्स्ट के बाद सेकेंड अटैक? यस, सो 8% चांसेस होते हैं जिनको एक बार अटैक आया है उनको दूसरी बार भी अटैक आ सकता है. You are 8% likely to get second attack. Okay, so why this happens? Because most of the time, I'm not saying all the time, most of the time facial palsy happens due to a viral attack or else a viral inflammation. Okay, so viruses usually stay dormant in our body. So whenever your immune system drops down, these viruses will get activated, and this activation could lead to your second attack. So make sure that you work on your immunity. That is more important. Life with OCD. During eating, my eye is watering. What is the solution? Unfortunately, watering around the eye due to synkinesis don't have any exercise solution. What you can do if it is too much, there is a procedure which is done by eye doctors, right? So what they do is they block your lacrimal duct, okay, from where the water is released. So that they will do a small procedure. With that, little water reduction will happen and it would be better for you. टाइटेनिक लव इज आस्किंग, दूसरी दफा फुल लेफ्ट साइड आता है बस फेशियल्स. Sorry, Titanic love, I don't got your, I could not understand your question. Can you reframe that? um, Payal Gulwani, can it recover completely with continuous massage and exercises? Again, as I said, Payal, no matter how much massage, how much exercises you do, recovery will happen, right? But this side of the face will not be the same as this side. This side of the face will stay weaker, okay? No matter how much you do. The more massage and exercises you do, more in the sense not throughout the day you should do more, like the faster you do, the consistent you do, you would be able to maintain your aesthetics, you would be able to maintain the facial symmetry better. Okay, for that purpose exercise and massage would be helpful, but they are not the cure. They will not do anything on your nerve. Fozia Farooq is asking, क्या एक दफा बेल्स पाल्सी होने के बाद वो ठीक ना हुआ हो तो दोबारा उस साइड पे बेल्स पाल्सी हो जाए तो क्या चांस है ठीक होने के? सी, सेकेंड अटैक और फर्स्ट अटैक में कोई डिफरेंस नहीं होता. ओके, सॉरी, उसमें डिफरेंस होता है. सॉरी. सो जो सेकेंड अटैक की वजह से जो रिकवरी आनी है वो डेफिनेटली आ जाएगी. बट आप ऐसे ही सिंपल सोच लीजिए, एक टूटा हुई हड्डी है, उस पे जब चोट लगती है, उसके ऊपर जब दोबारा चोट लगेगी तो दूसरी बार उस हड्डी को जोड़ने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, राइट? उस पे थोड़ा ज्यादा स्ट्रेन पड़ेगा. तो बस वैसा ही कुछ फेशियल पाल्सी में भी होगा. मैम, मेरे पड़ोस में 2-3 केस आए हुए हैं जिन्हें पहली दफा सिर्फ बेल्स पाल्सी हुआ, फिर कुछ महीने बाद लेफ्ट साइड फुल पैरालिसिस, अब वो डेथ कर गए. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? देयर इज नथिंग टू डू विथ योर विद डेथ और फॉर फेशियल पैरालिसिस. फेशियल पाल्सी एक बहुत ही लोकलाइज्ड
इन्फेक्शन है जो कान के अंदर होता है, ये बिल्कुल भी जानलेवा नहीं होता, डेथ नहीं होती किसी की बेल्स पाल्सी की वजह से। सो प्लीज डोंट थिंक दैट वे। ऑलराइट गाइस, एनी अदर क्वेश्चन? आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दिए हैं जो भी अभी तक के आए थे। क्या तो कोई तरीका है जिससे सिनकाइनेसिस खत्म हो जाए? अनफॉर्चुनेटली सिनकाइनेसिस, जैसे मैंने कहा, को कम किया जा सकता है, उसको 100% क्योर नहीं किया जा सकता, लेकिन हैविंग सेड दैट उसको मैनेज रखना जरूरी है। अगर आप वो नहीं करते ना तो वो बढ़ते जाता है। सो दैट्स व्हाट आई वुड से टू ऑल माय पेशेंट्स, राइट? फर्स्ट प्लेस एक्सेप्ट, जो भी है जैसा भी है पहले उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है? और फिर उससे रिवर्स जाना शुरू करो कि ओके ये मैंने एक्सेप्ट कर दिया, अभी हो गया, व्हाट इज देयर इन माय हैंड जिससे मैं मेरे फेस को जितना नियर नॉर्मल लग सकती हूँ, ठीक है? उसके लिए आप एक्सरसाइज करिए, उसके लिए आप मसाज कीजिए, उसके लिए आप मेंटली हैप्पी रहिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है मेंटली स्ट्रांग रहना, मेंटली हैप्पी रहना, क्योंकि उसी की वजह से आपके माइक्रो एक्सप्रेशंस कम होंगे, और माइक्रो एक्सप्रेशन जितने कम होते हैं उतने फेस पे स्ट्रेन कम आएगा और वैसे ही सिनकाइनेसिस कम हो जाएगा। बट आप कोई ऐसा सोच के बैठते हो कि मैं एक प्रोसीजर करा लूंगी उससे मेरा सिनकाइनेसिस ठीक हो जाएगा, अनफॉर्चुनेटली इट डजंट हैपन दैट वे। Life with OCD, ma'am, your videos really helped me and motivated me. Thank you so much. Thank you so much. Um, Again, Titanic love, I'm telling you, okay, death never happens due to Bell's palsy. Okay, never ever. So please be assured this is not a deadly condition. It is just a in local problem, okay, which will definitely have some impact on your face, but will never kill you. सैमल पटेल, मैम मुझे ऑनसेट के 2 मंथ होने वाले हैं, अभी दूसरी क्या ट्रीटमेंट ले सकती हूँ? सिमल, अगेन एज आई सेड, आपको अभी फेशियल मसाज पे फोकस करना चाहिए और आपको स्ट्रेचेस करने चाहिए। जितना आप फेस के मसल्स को रिलैक्स रखोगे उतना जो भी नर्व रिकवरी हो रही है, वहां से जो नर्व पे से प्रेशर खुल रहा है और रिकवरी हो रही है, वो सही जगह पे आ जाएंगी। देखिए, फर्स्ट 3 मंथ्स में हमारा जो गोल होता है बेल्स पाल्सी मैनेजमेंट में, वो होता है सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस को बचाना, जैसे सिनकाइनेसिस उसको बचाना। हम जितना उसको प्रिवेंट कर सके वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसको क्योर करना, उसको ठीक करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है? सो फोकस ऑन दैट। नर्व रीजनरेशन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वो होती रहेगी और वो हो जाएगी। सो उस पे फोकस ना डाल के फोकस ऑन योर फेशियल मसल हेल्थ। जितने मसल की हेल्थ रिलैक्सेशन जितना अच्छा बना रहेगा, जितना अच्छा ब्लड सर्कुलेशन रहेगा, उतने आपके फेशियल मसल्स अच्छे काम करेंगे, ठीक है? तो जब रिकवरी भी नर्व पे आएंगी तो वो भी अच्छी आएंगी। फाजिया, नो, आई एम रियली सॉरी, बट कोई सर्जरी ऐसी नहीं है जिससे सिनकाइनेसिस खत्म हो सकता है। I got Bell's palsy after doing root canal. Can that be the cause? Not necessarily. Okay, because root canal is around your jawline. Okay, your facial nerve is behind the ear, right? So yes, definitely we have one branch of facial nerve here as well. But if that is the case, then only the lower part of the face will be affected, not the upper part. Okay, अगर एक ही branch में damage हुआ है तो, which is not the case, so it doesn't look like that. Hi Ziva, why do I still have little pain in my ear after a year? If there is pain in your ear after a year, Ziva, definitely there is still little inflammation. थोड़ी सी inflammation है कहीं कोई तो body में जो अभी तक के गई नहीं है, उसी के वजह से ear में pain हो रहा है. We had a very amazing session, Ziva, with Dr. Ashwani Garg. So he would be a better person to help you. कुछ medical blood tests होती है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि ब्लड में कितने लेवल का इन्फ्लेमेशन है, और उस इन्फ्लेमेशन को कम करने का सबसे अच्छा तरीका होता है फास्टिंग। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं और वाटर फास्टिंग करते हैं, उससे काफी हद तक के आपके बॉडी में से जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, वो निकल जाते हैं और उससे आपको
ऐसी जो प्रॉब्लम जो इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रही है, जैसे हल्का हल्का बुखार आना, ईयर पेन होना, इसको आप काफी हद तक के कंट्रोल कर सकते हो जीमा। एनी अदर क्वेश्चन शिवांश? आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपकी वजह से मेरी बेल्स पल्सी ठीक हो गई। थैंक यू शिवांश, आई होप दैट यू स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। Okay guys, any other question for me? Is Bell's palsy completely recover? Bell's palsy onset because of accident? See, as I said, most of the time, 95% of the time, Bell's palsy recovers completely. Okay, whether it is because of accident, whether it is because of inflammation, whether it's because of something else, 95% time it recovers because the healing process is good most of the time, right? But sometimes there are some major factors. If that comes into the picture, there could be delay. So you have to wait and watch for first 3 months. Yes, Titanic Love, please ask your question. Thank you, Ziba. ओके क्या बेल्स पाल्सी ठंड की वजह से होता है? यस, बेल्स पाल्सी ठंड की वजह से हो सकता है। इसको टेम्परेचर चेंज बेस्ड बेल्स पाल्सी कहते हैं। अगर हम बहुत ठंडी जगह में एक्सट्रीम टेम्परेचर, राइट, जैसे ठंड की वजह से नहीं होता, क्या होता है अगर आप गर्मी और ठंडी ऐसे सिचुएशन में एक्सट्रीम में चले गए, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप अगर कोई एसी वाले रूम में बैठे हैं और एकदम से बाहर बहुत तेज गर्मी है, वो एक शिफ्ट जो होता है ह्यूमन बॉडी के लिए टेम्परेचर का, वो कई बार ह्यूमन बॉडी नहीं बेयर कर पाती, तब इन्फ्लेमेशन हो जाता है एंड दैट विल कॉज दिस प्रॉब्लम ऑफ बेल्स पॉल्सी। सो डेफिनेटली ठंड की वजह से हो सकता है। Most welcome. Mahesh Kumar is asking another question. Is there any chance that any major surgery that I have gone through one few months back can cause Bell's palsy now? Major surgery will not cause Bell's palsy, but due to surgeries, when you are taking a lot of medication, right, like antibiotics is there or steroids are given to you. So steroids also somewhere drops down your immunity. Okay, so your body is more susceptible to develop inflammation, to develop other infections. Okay, and that could lead to Bell's palsy. फौजिया इज आस्किंग मैम, मुझे 2 साल पहले बेल्स palsy हुआ था, मैंने मेडिसिन भी ली थी, थेरेपी भी करवाई थी, फिर भी ये फुल रिकवर नहीं हुआ, इसकी क्या वजह है? फौजिया बहुत सारी वजह होती है, ठीक है। एक तो होता है कि अगर उस समय आपने 72 आवर्स में आपकी दवाई ली थी या नहीं, अगर आपने 72 आवर्स में दवाई ले ली, लेकिन अगर वो जो वायरस जिसकी वजह से आपको बेल्स palsy हुआ, राइट, वो अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग वायरस था, जैसे हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस हो गया, वेरिसेला जोस्टर वायरस हो गया, ये बड़े स्ट्रॉन्ग वायरसेस होते हैं जो आसानी से बॉडी को नहीं छोड़ते हैं। ओके, इवन कोविड स्ट्रॉन्ग वायरस, ठीक है, तो ये बॉडी को इतने आसानी से नहीं छोड़ते, तो कई बार दवाई लेने के बावजूद भी वो वहां पे इन्फ्लेमेशन बनी रहती है, जिसकी वजह से डैमेज होता है ज्यादा नर्व को, ठीक है। तीसरा रीजन है, अगर आपकी इम्यूनिटी ही इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो आपके हीलिंग प्रोसेस में आपको हेल्प कर पाए, राइट, तब सिचुएशन अक्सर ये होता है कि लोग ना परेशान बहुत ज्यादा हो जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि भाई मैं रिकवर नहीं हुआ तो क्या। घबराहट, डर, पैनिक, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीजें हमारी इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करती है, हमारी इम्यूनिटी को कम कर देती है, ठीक है। जैसे ही बॉडी में इम्यूनिटी कम हुआ, बॉडी की ऐसी सारी प्रॉब्लम्स को फाइट करने की जो क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, वो कम हो जाती है, ठीक है, और उसकी वजह से कई बार डिले रिकवरी देखने मिलती है। सो मोस्ट प्रोबेबली दैट वुड हैव बीन द केस इन योर केस, फौजिया। मैम बीपी की दिक्कत से भी होती है? यस, बीपी की दिक्कत से बेल्स पल्स हो सकती है। Amal is asking, I got Bell's palsy on 2nd September and I still, my face is how it was, but I saw some little movement on my face. Awesome. All the very best, Amal. I hope that you recover soon.
Any other question for me? All right, so I guess all the questions are done. All right, guys, thank you so much for joining. Okay, there's a question. In ear pain during Bell's palsy is a common thing, and is Bell's palsy anywhere linked to obesity or improper food intake? Bell's palsy is not linked to obesity, but yes, it's linked to food intake. There are a lot of people who report that they had a lot of ice creams or a lot of cold drinks few days before they develop Bell's palsy, right? So that is a very common thing when you eat a lot of cold items or chilled items, which is beyond what you eat normally, you could develop Bell's palsy. Ear pain is a common thing. Not everyone go through ear pain, but most of the time people go through it. It's a common yes thing. हेलो मैम, मुझे 7 days हो गए बेल्स पाल्सी में, टेबलेट्स ले रहा हूँ, मसाज करना ठीक रहेगा? डेफिनेटली प्लीज डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फेशियल मसाज एंड हॉट फर्मेंटेशन, दैट विल हेल्प यू. All right, Titanic, now you have one more question, please ask. ओके, क्या स्मोकिंग की वजह से बेल्स पल्सी होती है? नो, स्मोकिंग की वजह से वैसे तो बेल्स पल्सी नहीं होती, लेकिन स्मोकिंग की वजह से अगेन योर इम्यून सिस्टम ड्रॉप्स डाउन. एज योर इम्यून सिस्टम ड्रॉप डाउन, एनी काइंड ऑफ viruses can easily attack your body and could lead to facial paralysis. ओके गाइस, सो या क्या मैम सिनकाइनेसिस में ईयरफोन ज़्यादा यूज़ करने से कोई नुकसान हो सकता है ईयर में? नो, नॉट रियली, बट ट्राई टू रिफ्रेन फ्रॉम लाउड नॉइसेस. जितना आप लाइट म्यूजिक या लाइट वॉइस रखेंगे, उतना इरिटेशन कम होगा. यू विल फील मोर रिलैक्स्ड ऑन योर फेस बिकॉज सिनकाइनेसिस इज लॉट टू डू विद ओवरटोन ऑफ फेशियल मसल्स. Any specific food item that you may suggest for better recovery rate? No specific food item. Three food item you should absolutely avoid when you are suffering from facial paralysis. Avoid and refrain sugar. Sugar is absolutely no for you. Don't have refined flour or maida, and don't eat a lot of fried items. Okay, these three things if you refrain from, eat plant based healthy diet. Vitamin B12 is a supplement that you can take. That will be helpful for you. मैम, जब मैं फेशियल मूवमेंट करना चाहता हूँ तब मेरे ईयर्स के साइड में साउंड कर क्रिएट होता है. एक्सीडेंट की वजह से डैमेज हुआ था, क्या कॉज? अगेन, एक्सीडेंट की वजह से अगर डैमेज हुआ है तो मे बी देर वुड बी अ बोनी थिंग जिसकी वजह से ऐसा आवाज आ रहा है, अदरवाइज ऐसे आवाज नहीं आना चाहिए. वॉलनट्स इनिशियल स्टेज में इट्स नॉट गुड टू हैव मच, बट इफ यू हैविंग वॉलनट, soak it and have it. That's what Dr. Ashwani suggested when he was there because I'm not a diet expert. Could I ask you for some advice about something else? I don't really have anyone to ask about this. All right, please go ahead. Ma'am, any vitamin supplement? Yes, vitamin B12 supplement is the supplement that you can have for facial palsy recovery. मैम, जब मैं बहुत ज़्यादा खामोशी होती हूँ तो लिटिल बिट साउंड सुनाई देता है. फोजिया, इट्स अगेन नॉट बिकॉज ऑफ सिनकाइनेसिस, ठीक है. कई बार सिनकाइनेसिस या फेशियल पैरालिसिस के वजह से ऐसे साउंड्स इनिशियल फेज में आते हैं, लेटर ऑन स्टेज में ऐसा नहीं होता है. मैं रिकमेंड करूँगी जस्ट प्लीज चेक फॉर योर नेक एंड योर ईयर, ठीक है, क्योंकि अगर वर्टिगो या टेनिटिस का प्रॉब्लम रहा तभी ऐसा सिम्टम आना चाहिए, अदरवाइज सिनकाइनेसिस में कभी ईयर में साउंड नहीं आता है. Okay, all right, guys. So I think I have answered all the question and time's up. Thank you so much for joining today's live. Thank you so much for patiently hearing me, and thank you so much for showing so much of support, so much of love, so much of appreciation for all the things that we are doing. Please keep on supporting HealthQ Rehab.
We are a digital community and a physio rehab platform for people with movement related disorders. We have got a lot of online physiotherapy services for conditions like facial paralysis, cerebral palsy rehab, chronic pain management. Even cancer rehab is something that we have introduced. Yes, we provide physiotherapy service for cancer patients as well. So if you know someone who needs help, please refer us. We would love to help them. Thank you. Okay, one more. Somebody has asked the last question. I'll take that. How long should a patient should take EMS? Now, if you ask my personal advice, I will never recommend EMS to any patient, and especially for the first year of the Bell's palsy, because natural recovery is the best recovery that you can achieve. EMS disrupts that recovery process. So, if you're taking EMS, please don't take it. Right. Thank you.